गङ्गातरङ्गकमनीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठं वामेन विग्रहवरेण कळत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। भूतादिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्भरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पासाङ्कुशाम्बयवरप्रदशूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। सीतां सुशोभितकिरीटविराजमानं पालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणं नागादिपारचितबासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पञ्चाननं दुरितमत्तमदङ्गजानां नागात्मकं धनुजपुन्नगपन्नगानां दावानलं मरणशोकजराटवीणां वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तेजोमयं सुगुणनिर्गुणमद्वितीयं आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकलनिष्कळमात्मरूपं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आसां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापेरतिं च सुनिवार्य मनस्समौदम् आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्यासोक्तं मस्तकम् इदं पठते मनुष्यं विद्याश्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहनिलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।